The months of April and May are known for many significant global observances. International Day for Mine Awareness, International Labor Day, World Laughter Day, International Firefighters Day, and the United Nations Peacekeepers Day, among others. But in 2025, these months took a new turn of extraordinary significance, especially in Southeast Asia. The military escalation between India and Pakistan in May 2025, triggered by the deadly April 22nd militant attack in Pahalgam, India, rapidly turned into a geographical crisis and extended far beyond South Asia. The attack that killed 26 civilians was immediately blamed by Indian authorities together with their Bollywood scripted media in Pakistan, despite of lack of credibility. मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ सैन्य टकराव, जो पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए घातक उग्रवादी हमले से भड़का था, तेजी से एक ऐसे भूराजनीतिक संकट में बदल गया जो दक्षिण एशिया से कहीं आगे तक फैल गया। इस हमले में 26 नागरिक मारे गए थे। विश्वसनीय साक्ष्यों के अभाव के बावजूद भारतीय अधिकारियों ने अपने बॉलीवुड की तरह स्क्रिप्टेड मीडिया के साथ मिलकर तुरंत इसका दोष पाकिस्तान पर मढ़ दिया। L'escalade militaire entre l'Inde et le Pakistan en mai 2025, déclenchée par l'attaque militante meurtrière du 22 avril à Pahalgam, s'est rapidement transformée en une crise géopolitique dépassant largement le cadre de l'Asie du Sud. L'attaque, qui a coûté la vie à 26 civils, a été immédiatement imputée au Pakistan par les autorités indiennes, appuyées par des médias scénarisés façon Bollywood, malgré l'absence de preuves crédibles. التصعيد العسكري بين الهند وباكستان في مايو 2025 الذي أثاره الهجوم المسلح الدامي في 22 من أبريل في باهلغام تحول بسرعة إلى أزمة جيوسياسية امتدت إلى ما هو أبعد من جنوب آسيا. الهجوم الذي أسفر عن مقتل 26 مدنياً ألقت السلطات الهندية جنباً إلى جنب مع وسائل إعلامها المهيكلة على طريقة بوليوود باللوم على باكستان رغم غياب الأدلة الموثوقة. The timing of the incident coincided with the US President J.D. Vance's visit to India, fueled suspicions among analysts, critics, and independent journalists who questioned whether this was another case of an internal security lapse or worse, a politically motivated event intended to galvanize nationalist sentiments ahead of key regional elections in Bihar, India. On the night of 29th April 2025, the long-standing rivalry between Pakistan and India reached its stunning new peak. The silence over the skies of Kashmir was shattered in dramatic air combat engagement. According to the Pakistani military sources, their J-10C fighter jets equipped with advanced PL-15 beyond visual range missiles operating within its own borders successfully penetrated Indian air defenses, neutralizing 6 Indian jets, including 3 of the most advanced French Rafale jets. These Rafales, each valued approximately $270 million, were reportedly defeated by J-10C that cost just $28 million each. The key to this outcome, as claimed by the defense analysts, was a coordinated electronic warfare maneuver that disabled the Rafale's cutting-edge ACER radar systems and Meteor missiles, a blow to what was considered Western air superiority in the region. कश्मीर के आसमान में पसरा सन्नाटा एक नाटकीय हवाई संघर्ष से टूट गया। पाकिस्तानी सैन्य सूत्रों के अनुसार उनके J-10C लड़ाकू विमान उन्नत PL-15 मिसाइलों से लैस होकर और अपनी ही सीमाओं के भीतर से संचालन करते हुए भारतीय वायु रक्षा प्रणालियों को भेदने में सफल रहे और 6 भारतीय लड़ाकू विमानों को निष्क्रिय कर दिया, जिनमें फ्रांस निर्मित सबसे उन्नत 3 राफेल लड़ाकू विमान भी शामिल थे। मई 2025 के तीसरे सप्ताह तक इस वीडियो के बनाए जाने के समय भारतीय सरकार ने इन नुकसानों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। हालांकि स्वतंत्र मीडिया संस्थानों ने ऐसे वीडियो फुटेज प्रसारित करने शुरू कर दिए हैं जो भारी क्षति का संकेत देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रक्षा जगत में हलचल मची हुई है। न केवल राफेल विमानों के प्रदर्शन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, बल्कि भारत को उनके निर्यात की शर्तों पर भी बहस हो रही है। अब कानूनी चिंताएं भी सामने आ रही हैं। क्या फ्रांसीसी निर्माता डसॉल्ट एविएशन ने अपने निर्यात समझौते में ऐसे आक्रामक अभियानों के दौरान राफेल विमानों के उपयोग की अनुमति दी थी, जो अब तक केवल आरोपों पर आधारित हैं और किसी स्वतंत्र व पारदर्शी जांच में सिद्ध नहीं हुए हैं? यह प्रश्न भी उठाए जा रहे हैं कि यदि यह घटना भविष्य में एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन सिद्ध होती है तो डसॉल्ट एविएशन पर किसी प्रकार की कानूनी जिम्मेदारी बनती है या नहीं। भारत लगातार ऐसी स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच से बचता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे तनाव बढ़ रहा है और वैश्विक निगाहें इस क्षेत्र पर टिकी हुई हैं, एक बात स्पष्ट है, दक्षिण एशिया के आसमान में शक्ति संतुलन बदलता हुआ दिखाई दे सकता है और उसके साथ ही हवाई युद्ध के भविष्य की दिशा भी। Dans la nuit du 29 avril 2025, la rivalité de longue date entre l'Inde et le Pakistan a atteint un sommet spectaculaire. Le silence qui régnait dans le ciel du Cachemire a été brisé lors d'un affrontement aérien dramatique. Selon des sources militaires pakistanaises, leurs avions de chasse J-10C, équipés de missiles PL-15 avancés et opérant à l'intérieur de leurs propres frontières,
ont réussi à percer les défenses aériennes indiennes, neutralisant 6 avions indiens, dont 3 des plus performants Rafales français. À la 3e semaine de mai 2025, au moment de la réalisation de cette vidéo, le gouvernement indien n'a pas confirmé ces pertes. Cependant, des médias indépendants ont commencé à diffuser des images suggérant des dégâts importants. Les cercles internationaux de défense sont en effervescence, non seulement en remettant en question les performances des Rafales, mais aussi en débattant des termes de leur exportation vers l'Inde. Des préoccupations juridiques émergent désormais. Le constructeur français Dassault Aviation a-t-il, dans son accord d'exportation, autorisé l'usage des Rafales dans le cadre d'une telle agression, qui reste pour l'instant une allégation non encore confirmée par une enquête indépendante et transparente. Les questions soulevées portent sur la responsabilité que Dassault Aviation pourrait encourir si cet incident s'avérait être une opération sous faux drapeau. L'Inde continue d'éviter toute enquête indépendante à ce sujet. Alors que les tensions montent et que les regards du monde entier restent braqués sur la région, une chose est claire, l'équilibre des forces dans le ciel de l'Asie du Sud pourrait être en train de changer. Et avec lui, l'avenir même de la guerre aérienne. في ليلة 29 من أبريل لسنة 2025 بلغت المنافسة الطويلة بين الهند وباكستان ذروة مذهلة جديدة. تم كسر الصمت في سماء كشمير من خلال اشتباك جوي درامي. ووفقا لمصادر عسكرية باكستانية، فقد نجحت مقاتلاتهم من طراز جي شرطة 10C المزودة بصواريخ متقدمة من نوع بيدل شرطة 15، والتي كانت تعمل ضمن حدودها، في اختراق الدفاعات الجوية الهندية، محققة تدمير 6 طائرات هندية، من بينها 3 من أكثر مقاتلات رافال الفرنسية تقدما. حتى الأسبوع الثالث من مايو 2025 وقت إعداد هذا الفيديو، لم تؤكد الحكومة الهندية هذه الخسائر، ومع ذلك بدأت وسائل الإعلام المستقلة في تداول لقطات تشير إلى أضرار كبيرة. الأوساط الدفاعية الدولية مشغولة ليس فقط بالتشكيك في أداء مقاتلات الرافال، بل أيضا بمناقشة شروط تصديرها إلى الهند. كما تظهر الآن مخاوف قانونية. هل سمح مصنع الرافال الفرنسي شركة داسو للطيران في اتفاقية التصدير باستخدام الرافال في مثل هذا العدوان، الذي يبقى في مرحلة ادعاءات ولم تثبت صحته بعد من خلال تحقيق مستقل وشفاف؟ الأسئلة المطروحة تشمل: ما مدى مسؤولية داسو للطيران إن وجدت، في حال ثبوت أن هذا الحادث كان عملية علم كاذب؟ The situation intensified dramatically on the night of the May 6th and 7th. The Indian armed forces started sending missiles and Israel-made drones claiming to have hit and struck targets inside Pakistan from within its own borders. Pakistan showed restraint. Pakistan then warned of a powerful retaliatory strike, which materialized on May 10th when Pakistani missiles struck the key Indian military installations, air bases, and missile storage sites, shocking the world with the scale and precision of its response. As of the third week of May 2025, at the time of making of this video, the Indian government has not yet confirmed its losses. However, independent media outlets began circulating footages suggesting significant Indian damage. International defense circles are abuzz, not only questioning the performance of the Rafales, but also debating the terms of their export to India. Legal concerns are now also emerging. Did the French manufacturer Dassault Aviation, their export agreement, authorize the use of the Rafales during such aggression that are more of an allegation and not yet proven so in an independent investigation and transparent way? Questions being raised are that what liability, if any, could Dassault Aviation face in case this incident is proved to be a false flag operation? India is continually avoiding such an independent investigation. Critics are also raising concerns about whether the high-end military technology should be supplied to Indian forces, demonstrating lack of operational sophistication to use them effectively, echoing memories of the 2019 Balakot incident when Pakistan downed Indian jets and captured the pilot, later returned as a gesture of goodwill. As the tensions rise and global eyes remain fixed on the region, one thing is clear: the balance of power in the skies over South Asia may be shifting, and with it, the future of the aerial warfare itself. The pattern of such India-Pakistan escalations is not new. Similar incidents such as the 2019 Pulwama attack, the 2016 Uri attack, the 2008 Mumbai attack, and the 2000 Chitti Singhpura Sikh massacre attack have all followed a familiar script. All deadly incidents swiftly blamed on Pakistan, all without transparent investigations, coinciding with significant political events or visits by Western leaders capitalizing on the presence of the worldwide media. These incidents have historically been exploited by the Indian government to whip up national fervor,
justify military aggression, and distract from internal political pressures. The incidents were ironically pre-scripted, so that minutes after these incidents, the media war began clearly following a preconceived and an advised pattern. The pre-planning of such incidents, using the media heavily, is seen by the observers around the globe when Indian media was reporting in advance something horrific that was about to take place in Pakistan in the province of Balochistan. The day after, reports came of a terrorist attack and attempt to kidnap a passenger train named as Jafar Express on March 11, 2025 in Balochistan that resulted in killing of 28 lives, and the drama continued for 36 hours till Pakistani forces gained control of the train. Le schéma de ces escalades entre l'Inde et le Pakistan n'est pas nouveau. Des incidents similaires, tels que l'attaque de Pulwama en 2019, l'attaque de Uri en 2016, les attentats de Mumbai en 2008 et le massacre de Chittisangpura en 2000, ont tous suivi un scénario familier. Des incidents meurtriers rapidement imputés au Pakistan, tous sans enquête transparente, coïncidant avec des événements politiques majeurs ou des visites de dirigeants occidentaux, tirant parti de la présence des médias mondiaux. Historiquement, ces incidents ont été exploités par les gouvernements indiens pour susciter la ferveur nationaliste, justifier des actions militaires et détourner l'attention des pressions politiques internes. Ironiquement, ces incidents étaient prescriptés, de sorte que quelques minutes après leur survenue, la guerre médiatique commençait, suivant clairement un schéma préconçu et conseillé. La planification préalable de tels événements, utilisant largement les médias, a été observée par des analystes du monde entier, notamment lorsque les médias indiens annonçaient à l'avance qu'un événement horrible allait se produire dans la province pakistanaise du Baloutchistan. Le jour suivant, des rapports ont fait état d'un raid terroriste et d'une tentative d'enlèvement d'un train de passagers nommé Jafar Express, le 11 mars 2025 au Baloutchistan, qui a coûté la vie à 28 personnes, le drame se poursuivant pendant 36 heures jusqu'à ce que les forces pakistanaises reprennent le contrôle du train. भारत पाकिस्तान के बीच इस तरह के तनाव और टकराव का पैटर्न नया नहीं है। 2019 का पुलवामा हमला, 2016 का उरी हमला, 2008 के मुंबई हमले और 2000 का चिट्टिसिंघपुरा नरसंहार जैसी घटनाएं सभी एक परिचित पटकथा का पालन करती रही हैं। सभी घातक घटनाएं, जिनका दोष तेजी से पाकिस्तान पर मढ़ दिया गया, वह भी बिना किसी पारदर्शी और स्वतंत्र जांच के, और अक्सर ऐसे समय पर जब महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाएं हो रही होती हैं या पश्चिमी नेताओं की यात्राएं होती हैं, जिनके कारण वैश्विक मीडिया की मौजूदगी का पूरा लाभ उठाया जाता है। ऐतिहासिक रूप से इन घटनाओं का भारतीय सरकारों द्वारा राष्ट्रवादी उन्माद भड़काने, सैन्य आक्रामकता को ठहराने और आंतरिक राजनीतिक दबावों से ध्यान हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। विडंबना यह है कि ये घटनाएं मानो पहले से ही स्क्रिप्ट की गई होती हैं, क्योंकि घटना के कुछ ही मिनटों बाद मीडिया युद्ध शुरू हो जाता है, जो स्पष्ट रूप से एक पूर्व निर्धारित और निर्देशित पैटर्न का पालन करता दिखाई देता है। ऐसी घटनाओं की पूर्व योजना और मीडिया के व्यापक उपयोग को लेकर वैश्विक पर्यवेक्षकों ने तब भी ध्यान दिया, जब भारतीय मीडिया पहले से ही यह रिपोर्ट कर रहा था कि पाकिस्तानी प्रांत बलूचिस्तान में कोई भयावह घटना होने वाली है। इसके एक दिन बाद 11 मार्च 2025 को बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस नामक एक यात्री ट्रेन पर आतंकी हमले और उसे अपहरण करने के प्रयास की खबरें सामने आईं, जिसमें 28 लोगों की जान चली गई। यह नाटकीय स्थिति लगभग 36 घंटे तक चली, जब तक कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने ट्रेन पर नियंत्रण हासिल नहीं कर लिया। الهند تواصل تجنب إجراء مثل هذا التحقيق المستقل. مع تصاعد التوتر وبقاء أنظار العالم موجهة نحو المنطقة، هناك أمر واحد واضح: قد يكون ميزان القوة في الأجواء فوق جنوب آسيا في طور التغيير، ومعه مستقبل الحرب الجوية نفسه. نمط التصعيد بين الهند وباكستان ليس جديداً، فحوادث مماثلة مثل هجوم بلواما في 2019 وهجوم أوري في 2016 وهجمات مومباي في 2008 ومجزرة تشيس فونفورا في 2000 اتبعت جميعها سيناريوا مألوفا، كلها حوادث دامية وألقي اللوم فيها بسرعة على باكستان، جميعها بدون تحقيقات شفافة ومتزامنة مع أحداث سياسية مهمة أو زيارات لقادة غربيين يستغلون وجود الإعلام العالمي. لقد استغلت الحكومات الهندية هذه الحوادث تاريخيا لإثارة الحماسة القومية وتبرير العدوان العسكري وتحويل الانتباه عن الضغوط السياسية الداخلية. ومن المفارقات أن هذه الحوادث كانت معدة مسبقا، بحيث يبدأ الإعلام في بث الحرب الإعلامية بعد دقائق قليلة من وقوعها، وفق نمط معد سلفا ومخطط له. Fantasizing the events in a Bollywood showbiz style in a bid to gain a political edge is in the blood of the ruling Indian BJP party, dictating the media as matter of policy. What BJP Janata could not achieve militarily against Pakistan have been showcased in the Bollywood films covering up their shameless ways. Living examples of Narendra Modi's asking the audience in a procession to watch a movie on incidents like annexation of Kashmir on Union territory, relinquishing its earlier status as an autonomous area by abolishing Article
370 imaginary strikes against Pakistan as against defeated attempts, playing up ego on anti-Pakistan sentiment. This shift in the nature of the conflict forced the United States to abandon its initial hands-off approach, despite J.D. Vance's earlier statement of non-interference. The risk of Pakistan being a nuclear-armed state escalating against Israel was a scenario that West could not afford to test. The US thus rushed to broker an intermediate ceasefire, positioning itself as a peace and trade facilitator, not out of altruism, but to contain the fallout and prevent further erosion of Western military credibility. L'épisode de mai 2025 a rappelé au monde que, malgré son instabilité politique et ses difficultés économiques, le Pakistan restait un acteur important dans la matrice du pouvoir régional, voire mondial. Ce conflit a mis en lumière les vulnérabilités de l'Inde, remis en question la crédibilité de son arsenal fourni par l'Occident et souligné l'influence croissante du nexus stratégique Pakistan-Chine, un scénario cauchemardesque pour les décideurs indiens, comme l'a souligné le chef de l'opposition Rahul Gandhi, qui a imputé au nationalisme agressif du gouvernement Modi la responsabilité d'avoir rapproché encore davantage le Pakistan de la Chine. En fin de compte, la confrontation a démontré que les États-Unis et leurs alliés ne sont toujours pas prêts à prendre le risque d'un scénario où la technologie militaire chinoise défierait ouvertement les plateformes occidentales en situation de combat réel. La désescalade rapide visait moins la paix que le contrôle des dommages. Protéger l'industrie de la défense occidentale, contenir l'essor de l'influence chinoise et empêcher que le conflit ne dégénère en un affrontement religieux et géopolitique plus vaste, susceptible de provoquer des conséquences imprévisibles. وقد لاحظ المراقبون حول العالم التخطيط المسبق لمثل هذه الحوادث باستخدام الإعلام بشكل كثيف، كما حدث عندما كان الإعلام الهندي يبلغ مسبقا عن شيء مروع كان سيحدث في إقليم بلوشستان الباكستاني. وفي اليوم التالي، ورد التقرير عن هجوم إرهابي ومحاولة اختطاف قطار ركاب يسمى جعفر إكبر باس في 11 من مارس لسنة 2025 في بلوشستان، أسفر عن مقتل 28 شخصاً. واستمر الحدث الدرامي لمدة 36 ساعة حتى سيطرت القوات الباكستانية على القطار، ومع ذلك ما مر إلى حد كبير دون أن يلاحظه الجمهور كان تطوراً حاسماً خلف الكواليس. What went largely unnoticed by the public, however, was a critical behind-the-scenes development. While the world focused on the ceasefire and the media war, US and Chinese officials quietly convened in Geneva a meeting for emergency trade negotiations. In a matter of hours, the US reduced tariffs on Chinese goods from 145% to 30%, while China cut its trade tariffs from 125% to 10%. Our $600 billion trade freeze was lifted from China, signaling that the real priority for Washington was to de-escalate the military confrontation in order to safeguard the broader economic and defense interests. In the end, Pakistan's performance not only rocked entire India by surprise, but also forced a global recalibration. To cut the chase, what did India gain from this misadventure? Zilch and humiliation? The losses India racked up are about to hit the Indian public like a monsoon flood. Modi's Hello Hero anti-Muslim narrative is to fall and torn to pieces. Pakistan came out with a knockout punch so that by the morning of May 10th, Indian defense was sitting like a duck. No operational airbases, no S-400 support system for the Air Force, and their prized BrahMos missiles reduced to ashes. Pakistan could have kept swinging its retaliation, but chose restraint, showing a level of maturity that India could have hardly imagined. Indian media churned out fake narratives faster than the Bollywood script writing, but the world knew who was banging and who was begging. Indian dream of global superpower shattered to pieces. India did not only humiliate itself, but it dragged its allies down too. Russia disappointed with smashing of its S-400 air defense system like a firecracker. Israel, with its honored Harab drones, hit by Pakistanis like flies and mosquitoes. France's Pride Rafales flew like blind birds, blown in the air to pieces. All these Indian allies are now rethinking their deals with New Delhi. India is in the state of denial. They need therapy. The government telling its people nothing has happened, while the world at large laughs on them. India needs to stop lying to its people and the world. Pakistan's formidable punch is humiliation of the century. India today is left in the world licking its wounds. The scoreboard of a combat never lies. The May 2025 episode reminded the world that despite of its political instability and economic troubles, Pakistan still remained a significant player in the regional and even on the global power metrics. This context exposed India's vulnerabilities, brought into question the credibility of its Western-supplied arsenal, and highlighted the growing influence of Pakistan-China strategic nexus, a nightmare scenario for Indian policymakers. As pointed out by the opposition leader Rahul Gandhi, who blamed the Modi government's
aggressive nationalism for pushing Pakistan even closer to China. Ultimately, the confrontation demonstrated that the US and its allies are still unwilling to risk a scenario where Pakistan-Chinese military technology openly challenges Western platforms in a live combat. The swift de-escalation was less about peace and more about damage control, protecting the West, defense industry, containing the surge of Chinese influence, and preventing the conflict from spiraling into broader religious and geographical geopolitical showdown that could ignite unpredictable consequences.